Good evening, student. Hello. Am I audible to you all? Yes? Good. Very good. So, as we all know, we are at the chapter triangles, right? Already we have seen properties of triangles. When can we say that given two triangles are similar? Then, if two triangles are similar, then what can we say about corresponding sides? What can we say about corresponding angles and many more? So, already we are going through few questions from exercise 6.3 and जैसे आपको पता है बहुत बड़ा वाला एक्सरसाइज है as well as important भी है. So similarly next हमारा क्वेश्चन आज हम स्टडी that is question number 7 from exercise 6.3. First of all, we'll just go through what is the question. Are you getting this one? Yes, I'm audible to you. Fine. So our question is altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P. Then what we have to show? That we have four pairs of triangle and we have to show the similarity between them. Right? The first one is triangle AEP is similar to triangle CDP. The second one is ABD is similar to CDE. Third one is AEP is similar to ADB. And the last one, PDC, is similar to BEC. Getting this one? Okay. So when can we say that given two triangles are similar? We have to check which criteria holds for this case, right? So we'll try to do first one. Given that altitudes AD and CE intersect each other at point P. So before that, just tell me what is the meaning of altitude? When can I say that AD is an altitude? If I am talking about triangle ABC, we have side BC. Getting this one? BC में से हम एक ऐसा point लेंगे so that it will join that point with A. We can say that AD is perpendicular to BC. जो भी सामने वाला point मिलेगा हम उस point से perpendicular draw करेंगे. This is known as altitude. Altitude is nothing but इससे आपको directly line मिल सकती है. So they are intersecting at point B. So we have one triangle that is ABC. Actually, this is our main triangle. But inside of that, there are sub triangles. आपको उसी की similarity prove करनी है. Getting this one? Okay, these will be our altitudes. We can see AD and CE intersect each other at point P. Yes, this will be our intersecting point. We'll go through the first question that we have to show that AEP is similar to CDP. So these will be our two triangles. We have to prove similarity between these two triangles. Are you able to see this one? Correct. So the yellow one and green one. If we have to show similarity between them, then obviously either one of the criteria should be whole. First one is SSS, but now we can see there it's something about angles, right? So we'll just check it. We'll start our proof. What we have to do? जो भी ट्रायंगल की सिमिलरिटी आपको लिखनी है सबसे पहले आपको वो ट्रायंगल्स के नेम लिखने हैं, राइट? सो इन ट्रायंगल AEP and triangle CDP, we can see angle E and angle D are of 90 degree, right? What will be reason for it? Obviously, AD and CE are altitudes. So, we can say that angle AEP
and PDC will be 90 degrees. Correct. Getting this one? Yes? Okay. Now we'll talk about this triangle. This is nothing but we can see that CPD and APE are making X factor, right? X factor is nothing but they will be opposite angle. And we know that opposite angles are upside angle. So we can say that measure of angle AP, that is angle APE, is same as angle CPD. What will be reason for it? It is nothing but vertically opposite angles. Getting this one? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? डाउट है इसमें कुछ? ओके, आपको क्या करना था? आपको चेक करना था। सबसे पहले हमने ये देखा कि किन एंगल के बीच में आपको सिमिलैरिटी प्रूव करनी। आफ्टर दैट जितने भी आपके पास क्राइटेरिया है उसमें से कौन सा वाला ही फुलफिल कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको चेक करना था, राइट? सो that we can see as AD and CE are altitude, so it makes 90 angle, and APE and CPD is nothing but vertically opposite angles. So we can say that triangle AEP and CDP will be similar triangle by similarity criteria. Good. Getting this one? समझ में आ रहा है क्या ये? हमने क्या किया था? We have few similarity criteria. First one रहता था SSS. But as we all know, given question में कुछ आपके पास length नहीं था. Means side BC का रहेगा, side CD का रहेगा, इतना measurement रहेगा. It means that आपको लेंथ ऑफ साइड के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया था, राइट? सो ऑब्वियसली एसएसएस का तो हम इस केस में यूज नहीं करने वाले। सेकंड थिंग, ये तो क्लियर था, एडी एंड सीई आर अल्टीट्यूड, सो वी कैन सी देयर विल बी अ ट्रायंगल। नेक्स्ट वन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो using this one we can say that by a similarity criteria AEP and CDP will be similar triangle. समझ में आ रहा है बच्चों ये? Okay. So first one तो हमारा डन है. Now we will move on for the second. Second one क्या है देखो? We have to check that triangle ABD and CBE are similar triangle. So this will be our triangle ABD and this will be our triangle CBE. Getting this one? Okay. तो फिर इन दोनों ट्रायंगल के बीच में कॉमन पार्ट कौन कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? We'll go through it. So we can say that in triangle ABD and CBE, again ADB and CEB will be 90 degree angle symmetrical because AD and CE are altitudes. So it will make a 90 degree angle with the respective sides. So ADB is equal to CEB. What will be reason for it? Yes, each is of 90 degree. Good. Now एक एंगल का तो हो गया, सो जितने भी अगेन आपके पास क्राइटेरिया है उसमें से चेक करो. वन एंगल का तो ट्रू है. नाउ वी चेक फॉर दिस वन that angle B is common, vertex B is common between these two triangles. अगर आपका vertex common है तो obviously जो भी आपको angle मिलेगा it will be common, right? So and A same angle है because of the common angle. Again आपको क्या मिला? 90 degree वाला same मिलेगा, common angle वाला same मिलेगा. So we can say that triangle ABD is similar to triangle CBE. Getting this one clear हो रहा है? Again, आपने कौन सा वाला theorem use किया? आप कौन सा वाला criteria use करने वाले हो? I can see first one and second one. जो भी है angle के बारे में. So ABD is similar to CBE. Again,
by a similarity criteria. Clear with this? Doubt है क्या इसमें कोई? If you have any doubt, then you can ask in the chat box. So by this way, we have proved the first two slides. Done with this? Should we move on for the next one? AEP is similar to CDP. ये तो हो गया है. ABD is similar to CBE. ये भी हो गया है. Now we'll try for the next two one. Okay, should we move on? Okay, thanks. Now we'll go for third and fourth one. Third one तक have करें तो AEP is similar to ADP. ये आपको प्रूव करना है. AEP is similar to triangle ADP. Okay? Fine. We'll start. What should be the first sentence? The first sentence is that in triangle AEP and in triangle ADB. Obviously, CE and AD are nothing but altitudes. So we can say that angle AEP and angle ADB will be equal. What will be reason for it? Correct. Each of 90 degrees. So first वाला तो हो गया. Now second one, we can see vertex A. Are you able to see this one? Vertex A is common between these two triangles. अगर आपका vertex same रहेगा, then obviously its angle will be same. So I can say that on the second line, angle PAE is same as angle BAD. PAE is same as BAD because of common angle. So again you can see that two angles of a triangle are equal. So if this is the case, then we can say that two triangles will be similar. So triangle AEP is similar to triangle ADB by a similarity criteria. Getting this one? समझ में आ रहा है ये? Good. Similarly, can you solve for the fourth one? That is, what is the case? Now, we have to show that, we have to prove that triangle CDP and triangle are similar triangles. In triangle PDC and in triangle PEC. So, what will be the first case? Obviously, जो हमने पहले तीन केस के लिए किया, वही से हम स्टार्ट करेंगे. We know that AD, getting this one, AD and CE are altitudes. So obviously they will form a 90-degree triangle. So I can say that angle PDC is same as angle PEC. What will be the reason for it? Nothing but each is of 90 degree. Okay. Then again check that is there is any vertex common here? So I can say that as you can see, the common vertex, therefore angle PCD is same as angle PC. Vertex same रहेगा, तो angle भी same रहेगा, right? So as C will be a common angle, I can say that PCD and PCE will be same angle. So again by a similarity criterion, I can say that PDC and PEC will be similar triangle. Triangle PDC and triangle PEC will be similar triangle. Clear हो रहा है क्या ये? Doubt है क्या इसमें कोई? हमने क्या किया देखो? We have to prove or we have to show that the four pair of triangles are similar. So as we all know, we have three properties. The first one is all about SSS. बट इस क्वेश्चन में आपको कोई भी बात बोली नहीं गई थी.
for length of side. So obviously SSS का तो अभी हमें यूज नहीं होने वाला था. Second important one is that AD and CE are altitudes. अगर जब भी आपको altitudes के बारे में बोला जाता है then obviously आपको 90 डिग्री वाला नहीं जाएगा. 90 डिग्री के केस में आप अगेन फिर each of 90 डिग्री ये यूज कर सकते हो. And if we are talking about two triangles which have the same vertex, अगर vertex same रहेगा तो उस केस में जो भी आपका respective angle रहता है, we can prove that this will be common angle. So by a similarity criteria, we have proved these four similarity. Clear this one? समझ में आ गया आपको हमने क्या क्या किया था? एक बार रिवाइज करो. Okay, now we'll go to the next question. Okay. So the next question is question number 8 from exercise 6.3. I hope you are getting this one right. कुछ डाउट है क्या बच्चे आपको? If you have any doubt, you can ask me. Okay. So we'll try to solve question number 8 from your exercise 6.3. What is the given question? E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD. Always remember that if we are trying to solve a question from geometry, we should take help of a figure, right? Because of only parallelogram क्या है समझ में नहीं आएगा. B किधर है, CD किधर है, clear नहीं हो रहा है. So what we do first of all, we'll check what will be its figure. Given that parallelogram ABCD, so we can see there is a parallelogram. What are the properties of parallelogram? Can you tell me? Yes. When can we say that given quadrilateral is a parallelogram? What should be properties for it? I want your answer in the chat box, okay? Question is very simple. When can we say that given quadrilateral is a parallelogram? That name suggests itself what should be the criteria for it. Are you able to see this one? Yes. Tell me in the chat box what must be properties, what must be criteria, so that we can say that given quadrilateral is a parallelogram. Good. Parallelogram is nothing but we can say that opposite sides will be parallel, right? And opposite angles are of same measure. So we have to use this. Fine. So what is the case? E is a point on side AD. AD तो आप देख सकते हो, right? We have to take a point which will be on side AB, such that we can say BE intersect CD at F. तो ये जो आप AD देख सकते हो, AD को आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड करना पड़ेगा, so that we can take a point on it. So this will be point E on side AD, and as in the given question, BE intersect CD at F. So E point समझ में आया? Yes, obviously it should be the outside. As BE intersects CD at F, so we can denote that point as the end. Clear with this? Okay. So now it is all about figure. So now we try to see what we have to prove here. What is our question? Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. Triangle ABE
is similar to CFB. Clear हो रहा है क्या ये? See, this will be our triangle ABE and this will be our triangle CFB. Okay, fine. We'll try to do it. So, as we all know, ABCD is a parallelogram. It is a given case. So that we can say opposite angles will be of same measure. Right? Opposite angles are always equal for a parallelogram. This is nothing but a property of parallelogram. So I can say that angle A is same as angle C. Measure of angle A is same as measure of angle C. What might be the reason for it? Opposite angles of parallelogram are equal. Great. So now, what can we use another as ABCD is a parallelogram. So opposite sides will be parallel to each other. So can I say that BC is parallel to AD? Again using property of parallelogram. Okay. And as we have done here, E is nothing but point on side AD. So AD is same as AE, right? Because ADE is nothing but collinear point. So we can say that BC is parallel to AD, right? Again, opposite sides of parallelogram are parallel. We'll use this one. And as we all know, A, then B and E are collinear points. So instead of writing AD, can I write AE there? Yes. So our next step is that I can say BC is parallel to AE. So BC is parallel to AE and BE is nothing but transversal. So transversal and two parallel lines. If this is the case, then we can say many more are same as other things. So for because of this transversal BE and BC is parallel to AE, I can say that AEB is same as CBF. ABE is same as CBF. आपको क्या याद रखना है देखो, if you can see there is a letter Z. अगर आपको Z दिखाई दे रहा है तो अगर Z रहता है तो आप कौन सा वाला यूज कर सकते हो? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. गेटिंग दिस वन? ओके. सो फर्स्ट वन आपको क्या मिला? Angle A and C are same because of their opposite angles of same parallelogram. What we have proved here that angle AEB is same as CBF, right? So I can say that in triangle ABE and CFB, A and C are of same measure. That is, measure of angle A and measure of angle C are same. So A and C will be equal angle. We have just proved that AEB and CBF. AEB. Are you able to see this one? Correct. AEB and CPF are of same measure. So, yes, you can do the rest part. Correct? What is do here? If two angles are of equal measure, so we can say that the two respective triangles will be similar triangles. Triangle ABE is similar to triangle CFB. Don't forget to write the reason here, okay? Because it has half mark in your board exam. So by a similarity criterion, we can say that even two triangles are similar. समझ में आ रहा है? डाउट है आपको कुछ? हमने किसका यूज किया? Given that ABCD is a parallelogram. So if we have a parallelogram, then we know its two properties. The first one is that opposite sides of parallelogram are parallel.
and second one is that opposite angles of parallelogram are equal. इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज किया है हमने किसके लिए सबसे पहले तो हमने यूज किया अपोजिट एंगल्स आर ऑफ सेम मेजर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल सो ए एंड सी will be same. Next one, if we have a parallelogram then opposite sides will be parallel, but what we have done in this line AD, we have just extended this line so that we can plot point E on it. So instead of writing BE is parallel to AD, we have used BC is parallel to AE here. Instead of BC parallel to AD, we have used BC parallel to AE here. And BE is nothing but a transversal. So again, we can see there is a letter Z. Letter Z is nothing but alternate interior angle. Right? So, by AA similarity criteria, we have proved that ABE and CFB are similar triangles. डाउट है बच्चों आपको कोई समझ में आ रहा है ये See, 6.3 is bit lengthier one exercise, but it is important as well. आपको each and every type कुछ अलग अलग मिलेगा फिर आपको तो फाइंड क्या करना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल भी प्रूव कर रहे इसके लिए आपके पास 3 क्राइटेरिया नहीं है लेकिन जैसे हमने पहले वाला देखा उस केस में हमने क्या यूज किया था उस केस में हम अल्टीट्यूड वाला बार बार बोलते थे अल्टीट्यूड इज नथिंग बट 90 डिग्री वाला 90 डिग्री वाला मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 ये आप यूज कर सकते हो फॉर this question contains a parallelogram so what we will use here will go through properties of parallelogram so that we can prove the required result okay fine now we'll go for the next question we have done question number 8 now right okay. So now we'll try to solve question number 9 check किया आपने correct what is the question in triangle ABC and triangle AMP are two right angle triangles ये तो बहुत ही अच्छा हुआ right angle दिख रहा है मतलब 90 डिग्री है मतलब पहले से आपको पता चल रहा है that इन ट्रायंगल में से कोई एक रिस्पेक्टिव एंगल जो आपका रहेगा वो is equal to that is equal वाला केस बोल सकते हैं and ये भी हमने clear किया that right angle at B and M respectively. So what we have to prove that angle ABC is similar to AM means two right angle triangles जो भी आपको मिलेंगे it will be similar ये आपको प्रूव करना है and what is second case is nothing but we have to say that CA upon PA is same as BC upon NB CA upon PA that is जो भी corresponding sides रहेंगे we have to prove that its proportional will be same okay जैसे मैंने पहले बोला if we are talking about if we are trying to solve a question from geometry then we have to take the help of figure right क्या बोला था ABC राइट एंगल रहेगा AMP राइट एंगल रहेगा सबसे पहले आपको क्या क्लियर होना था जो भी आपके पास ये टू ट्रायंगल्स है इट हैज अ कॉमन वर्टेक्स तो आपने ये जो कॉमन वर्टेक्स है ये इधर कर दिया है देन सेकंड थिंग इज ABC में आपको B वाला जो पॉइंट है उधर 90 डिग्री बनाना था एंड फॉर AMP आपको M के इधर 90 डिग्री बनाना ओके सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फिगर देन ओके वेरी गुड कुछ बच्चों को तो अभी फिगर देख के ही समझ में आ जाएगा 90 डिग्री वाला केस दिख रहा है एंड वी कैन सी देयर इज अ कॉमन वर्टेक्स if you have a common vertex then जो भी आपका respective angle रहेगा it will be common right okay so we'll try to solve this question the first part is that
we have to prove similarity between these two triangles. Okay? That is ABC and AMP. This will be right angle triangles. So I can say that in this triangle, in triangle ABC and triangle AMP, ए आपको कॉमन पॉइंट मिलेगा जैसे मैंने बोला था कि देयर इज अ कॉमन वर्टेक्स देन रिस्पेक्टिव एंगल भी सेम रहेगा तो रिस्पेक्टिव एंगल इज नथिंग बट ए बी सी वाला एंगल ए आप कैसे लिख सकते हो यू कैन राइट ईदर बीएसी और सीएबी व्हाटएवर यू वांट टू डू बट ऑलवेज रिमेंबर दैट जो कि आप यूज करोगे नाउ वी आर अबाउट बीएसी करेक्ट BAC is same as MAP. This is nothing but a common angle. Second thing, जो भी given part है, that is these two are two right angle triangle. Right angle triangle है, तो फिर आप ये बोल सकते हो that angle ABC, angle ABC is same as angle AMP. Right? Each of 90 degrees. So we can say that by AA criterion, these two triangles will be similar triangles. So we are done up to one part. We are done up to 50% of this question. First part of the two. Now what we have to do that CA upon PA is equal to PC upon MP. What can we use here? CFP is nothing but corresponding sides. So if we have a similar triangle, we can say that CA क्या किया देखो फर्स्ट वाला जो भी कुछ आपका ट्रायंगल था उस केस में आप थर्ड टू फर्स्ट कंसीडर करें. So if this is a case, third to first one for this triangle, I can say that P to N. राइट प्रोपोर्शनलिटी आपको चेक करनी थी फर्स्ट केस में थर्ड टू फर्स्ट दैट इज सी टू ए कंसीडर किया इसके लिए ये केस में आप क्या करोगे थर्ड टू फर्स्ट वन दैट इज पी टू ए सिमिलरली नेक्स्ट वन इज दैट बीसी बीसी नथिंग बट सेकंड टू थर्ड अगर आप इधर सेकंड टू थर्ड कंसीडर करोगे then what will be its corresponding respective side for the second triangle it will be second third that is it. What will be reason for it? Reason is nothing but corresponding sides of similar triangle are equal. Corresponding sides of similar triangles are equal. Then with this समझ में आ रहा है क्या क्या यूज किया हमने इधर राइट एंगल था मतलब एक तो आपको मिल रहा था सेकंड वन वी कैन इजीली सी देयर इज अ कॉमन वर्टेक्स जैसे हमने बोला है अगर वर्टेक्स कॉमन रहता है तो रिस्पेक्टिव एंगल कॉमन रहेगा जो हम इक्वल है ये बोल सकते हैं सो अगेन बाय ए क्राइटेरिया again by angle similarity criteria we can say that given two triangles are similar. So if two triangles are similar then we know that corresponding sides of similar triangles are in proportion. Okay, clear with this? Good. Now move on for the next question. You can easily solve the 10th question, right? So, we'll try to solve question number 11 here. If you have a doubt in question number 10, you can ask me in the chat box, but it is your own question. You can easily go through it, okay? We'll try to solve question number 11. What is the given case? E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. मतलब आपको क्या करना है आपको ऐसा वाला ट्रायंगल कंसीडर करना है जिसमें two sides will be are of same length. What is our next part is
AD perpendicular to BC. Obviously, we'll take the help with figure. फिगर अगर देखते हैं तो इजीली समझ में आ जाता है. क्या बोला है देखो उन्होंने, AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC. Then what we have to do? We have to prove similarity between two triangles ABD and ECF. Triangle ABD is similar to triangle ECF. ये आपको प्रूफ करना है. क्लियर हो गया बच्चों? There is no need to write this question, okay? But try to draw this figure so that आपको easily समझ में आ जाए. So what was the case here? We have a triangle in which two sides are of same length. That is, A, B, C will be isosceles triangle, right? With AB is equal to AC. C. मैंने इस लेक्चर में पहले ही बोला था, राइट? अगर आपको कुछ ट्रायंगल की सिमिलरिटी प्रूव करनी है, then we can take the help of three criteria. Either first one, second one or third one. अभी इस केस में आपको कुछ लेंथ के बारे में बोला गया है, राइट? It means that we can use either SSS और SAS. कौन सा वाला यूज करना है देखते ही. पहले ये समझ में आ रहा है. As given in the figure, AB is equal to AC. ये तो रहेगा. Now what is the next case? AD is perpendicular to BC. Perpendicular is nothing but आपको 90 डिग्री मिलता है. Okay. Then similarly, जैसे AD is perpendicular to BC है, वैसे ही आपको एक और बात दी गई है, that is EF is perpendicular to AC. Then what we have to prove? ABD is similar to CEF. सबसे पहले ये देखो, ये ABD कौन सा वाला रहेगा? Are you going to see this one? Yes, the red one, right? And what will be our triangle ECF? ECF is nothing but the green, right? Good. So we'll try to do it. सबसे पहले क्या है? परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर मतलब आपको 90 डिग्री मिल रहा है. And isosceles triangle है, it means that side के बारे में बोला जाएगा, right? That side AB and side AC will be are of equal length, so I can say that AB is equal to AC. आपको one triangle की पेयर जो 90 डिग्री वाली है वो इक्वल मिल रही है, two sides इक्वल मिल रहे हैं, right? Will take the. So if triangle ABC, AB is equal to AC, right? What will be reason? Given part. Good. Then, if AB and AC will be of same length, then we can say that its opposite angle will be of same measure. Clear this one? अगर AB and AC आपको same मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है? AB and AC साइड सेम है, तो उसका जो भी अपोजिट एंगल आपको मिलेगा वो भी सेम मिलेगा. सो वी कैन से दैट एंगल ABC and angle ACB will be same. What will be reason? जैसे हमने अभी देखा, अगर साइड से है इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल भी, राइट? सो ABC is same as AC. What will be reason? Angles opposite to equal sides are equal. Good. So we are done with one side and one pair of angles. Now we use the right hand. So ABD is same as ECF. Correct? Getting this one? समझ में आ रहा है? Good. Now AD perpendicular to BC, EF perpendicular to AC. So we can say that in triangle ABD,
Measure of angle ABD and FCE will be same. Measure of angle ABD and FCE will be same. समझ में आ गया क्या? सबसे पहले हमने ये क्या प्रूव किया? जो आपको ये एंगल दिख रहा है, राइट? That is ABC and ACB are of same angle. But now for this case, what we have used here? Measure of angle ABD is same as FEFC, राइट? जो भी आपको सिर्फ ABC के एंगल से मिल रहे थे, मींस हम ये जो चेक कर रहे थे वो सिर्फ ट्रायंगल ABC के लिए कर रहे थे. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल EFC and ABC. ओके, एंड AB. सो क्या किया आपने? सिर्फ आपने नॉमेनक्लेचर चेंज किया, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ABD and ECL. This will be same. Second thing, ADB will be same as EFC, each of 90 degree. जैसे आपको easily बोला गया है that AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC. Therefore, triangle ABD is similar to triangle ECF. Again, by एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमने यूज क्या किया इधर से? जो भी आपको साइड सेम है ये बोला गया था, दैट इज साइड AB एंड साइड AC आर सेम. सो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. इसका आपने इधर यूज किया. ओके, क्लियर विद दिस? सो वी हैव प्रूव्ड दैट triangle ABD and triangle ECF are similar triangles. Are you getting this one? Okay. Doubt है क्या इसमें कोई? आपको each and every case समझ में आ रही है? कुछ भी अगर डाउट रहेगा, you might think that ये बहुत ही छोटा सा डाउट है, ऐसा कैसे पूछो? But no worries, you can ask in chat box. No worries. Okay. Now we'll try to solve question number 13 here. Okay. Because question number 12 जो है वो भी आप इजीली कर सकते हो. बहुत बड़ा ट्विस्टेड वाला वगैरह ऐसा कुछ केस नहीं है for question number 12. So we'll try to do question number 13. What is our question? Question is that D is a point on side BC. D is a point on side BC of triangle ABC such that ADC is same as BAC. Are you getting this one? Okay. Then what we have to show? CA square is equal to CP into CD. Okay. What is the given case? Measure of angle ADC and BAC are of same measurement, right? So these will be our two equal angles. What we have to show? We have to show that CA square is equal to CB into CD, right? CA square is nothing but CA into CA. ये आपको CB upon CD ऐसे प्रूव करना है. बट जितने भी अब तक हमने क्वेश्चन किए ये वाला तो फॉर्मूला हमें पता नहीं है. मतलब वन साइड इनटू सेकंड साइड इज इक्वल टू ऐसा कुछ हमने किया नहीं है अब तक. ये जो ट्रायंगल वाला है तो आपको क्या सकता है? आपको प्रोपोर्शनलिटी के बारे में पता है, राइट? इट मींस दैट व्हाट वी हैव टू शो हियर दैट CA अपॉन CD क्या किया? इस साइड का जो भी आपका CD था RHS वाला CD गया LHS पे. सिमिलरली LHS वाला जो एक है वो हम अगेन ले लेंगे इधर. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव? We have to prove that CA upon CD is same as CB upon CA. Clear with this? Getting this one?
आपको क्या प्रूव करना है समझ में आ रहा है? उन्होंने तो सिर्फ बोला था शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इनटू सी डी, तो हमने थोड़ा सा स्प्लिट किया दैट सी ए स्क्वायर is nothing but CA into CA is equal to CB into CD. जो आपको देखने की आदत है, it is all about A upon B is equal to C upon D. So हम उस वे में ये लिख रहे हैं CA upon CD is equal to CB upon CA. If we can prove this one, then we are done with this question, right? Clear हो गया ये? Okay. So are you able to see where is CA? CA is nothing but a side which is common to the both triangles, right? ये जो आपको CA मिल रहा है, CA is nothing but the common side of triangle. What about CB? Correct. This will be our CB. Where is our CD and CA? ये तो समझ में आ गया. So now we'll talk about the entire triangle. In triangle ABD, चेक किया आपने CA किधर मिलेगा, CB किधर है, CD किधर है and CD. So we can say that if we have to prove this one, सबसे पहले हमने ये चेक किया that हमारा ये CA किधर रहेगा, मतलब CA upon CD. आपका LHS तो वही है ना, right? CA upon CD. ये आपको क्या प्रूव करना है, देखो CB upon CA करते हैं फिर. If we can prove this one, then we have proved the required result, that is CA square is equal to CB into CD. So we start with the actual proof. I can see there are two triangles which are there. The first one is CAB and second one is CDA. आपको ये क्यों करना है? Because हमें देखो अभी प्रूव कब करना था इधर, that is CA upon CD is equal to CB upon CA. So we can use that corresponding sides of similar triangle वाला केस. इसके लिए तो आपको कोई similar triangles तो चाहिए. इसके लिए हमने two distinct triangles consider किए. कौन कौन से रहेंगे वो? ट्रायंगल CAB and triangle CDA. So what can we say that given part is that ADC is same as BAC. So we use here angle BAC, angle BAC is same as angle ADE. This is nothing but our given part, right? Okay. So we'll the next one. We can see in triangle CAB and in triangle CDA. C is a common vertex. तो हमने क्या देखा था? अगर वर्टेक्स कॉमन रहता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो भी कुछ रहेगा वो इक्वल रहेगा और कॉमन एंगल. So I can say that angle C is same as angle C because this is the common angle, right? So first वाला तो एंगल आपको मिल रहा है, सेकंड वाला भी आपको इक्वल मिला. So I can say that triangle CAB is similar to triangle ABC or CD by angle similarity criteria. Getting this one clear हो रहा है, समझ में आ रहा है? ओके तो आपको एक्चुअली क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CD अपॉन CD. लेकिन ये तो हमें समझ में नहीं आता है. सो फर्स्ट आपने क्या किया? CA इज नथिंग बट CA इनटू CA. फिर उसके बाद जो आपको हमेशा देखने की आदत है उस फॉर्म में हमने ले लिया. सो नाउ वी हैव डन विद द similarity of two triangles. So if two triangles are similar, then we can say that corresponding sides are in same ratio. So first one we consider CN upon, देखो first वाले में CN लिया, that is first and second. So second triangle में आप क्या consider करोगे? First and second. That is nothing but CD. Getting this one? Okay. So CA upon CD is same as what is the next part? CB upon CA. तो फर्स्ट वाले में CB आपको कितना मिलेगा? देखो by first to third अगर आप फर्स्ट ट्रायंगल का कंसीडर करते हो then what will be case here?
we have to talk about CA. Correct. Done with this. So I can say that CB upon CA, CA upon CD is same as CB upon CA. What will be reason for this? Corresponding sides of similar triangle. CST. CSST. ये shortcut use करते हैं ना? Right? That is corresponding sides of similar triangles are in same ratio. So ये वाला करना ही है आपको प्रूफ जो भी कुछ प्रूव करना था उस केस में फॉर्मेटिंग करना. So considering cross multiplication, I can say that CA square is equal to CB into CD. This is the required result. ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा ट्विस्टेड हो रहा था, राइट? अब तक जो भी हमने क्वेश्चन लिखे क्लियरली आपको 90 डिग्री तो दिख रहा था, अदरवाइज रिपीटेड वाली केस थी, अदरवाइज पैरेलल साइड है, ऐसे कुछ था. नाउ आई कैन सी देयर इज ओनली वन ट्रायंगल. वो ओनली वन ट्रायंगल में सिर्फ आपको दिया गया था दैट ये वाला जो आपका केस रहेगा एडीसी एंड बीएसी, ये सिर्फ एंगल सेम थे, आपको इतना ही बोला गया. एंड जो भी आपको शो करना था, जो भी आपको प्रूव करना था, वो भी जनरल में नहीं था, राइट? आपको क्या देखने की आदत है? फर्स्ट क्वेश्चन माइट बी शो दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा आपने क्या किया है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो भी रेशियो रहेगा उस वाले केस में आपको पूछा जाता है. बट दिस इज अ लिटिल बिट ट्विस्टेड वन क्वेश्चन. क्लियर हो गया? ये समझ में आ रहा है क्या? ओके. Now we'll try to solve the next question. We'll just go through the next concept. So before that, just tell me, are you completed your exercise? Which question do I why? That is, do it on your own. इसके लिए आपको homework के लिए दिए गए हैं, but you can easily go through it. ठीक है? So उसमें से जो आपका 10th वन है वो हम इधर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3. पहले तो मैंने बोला था कि आप होमवर्क के लिए कर दो, बट वी हैव एम्पल ऑफ टाइम, सो वी ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन हियर. The only thing is that थोड़ा सा अलग जो आपको दिख रहा है, it is all about what we have to show. For that, we'll just go through the question. What is our question? The diagonal of quadrilateral ABCD intersect each other at point O. Remember that they are not talking about square, they are not talking about rectangular, they are not talking about parallelogram or any other things. We just have to consider a general quadrilateral. Okay? Such that diagonals of quadrilateral intersect at O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. ऐसा कुछ दिया गया, मतलब इंटरसेक्शन वाला पॉइंट अगर लगता तो उसके बारे में आपको प्रपोर्शन दिया गया. And what we had to prove that ABCD is a trapezium. Okay, trapezium. What is the meaning of trapezium? Trapezium मतलब क्या रहता है? Properties of trapezium क्या रहता है? ओके, आपको एक थिंग देती है, ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम की एक तो प्रॉपर्टी सेम रहती है, सिर्फ एक. ओके, फाइन. बिफोर दैट we'll try to form diagram for this one, and what we have to show, ABCD is a trapezium. ये आपको प्रूव करना है. ट्रेपेजियम इज नथिंग बट जनरल कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा. So we try to form a diagram. क्या बोला गया है? ABCD is a general quadrilateral such that diagonals of quadrilateral, that is AC and BD, intersect each other at point O.
So first of all हम diagonals बना देते हैं and our intersecting point is nothing but O. Then what is the given part? AO upon BO. AO upon BO is same as CO upon BO. Then what we have to prove? That ABCD is a trapezoid. What is the meaning of trapezoid? जैसे मैंने आपको हिंट दी थी, करेक्ट? क्या आपको प्रूव करना है? तो अगर ट्रेपेजन वाला केस रहता है तो कोई एक पैर जो आपका रहेगा अपोजिट एंगल का, इट मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर. कोई एक अपोजिट साइड्स जो आपकी रहेगी वो आपको पैरेलल दिखने चाहिए. अभी जो हमने डायग्राम बनाया है उस केस में हम ये बोल सकते हैं दैट AB might be parallel to BC, right? Yeah, do it. Sorry, there is a print mistake. Okay, the question is that AB should be parallel to BC. AB should be parallel to BC. We have to prove this one. So we'll start proof. We'll start from the given part. What was the given part? That AO upon BO is same as CO upon BO. Right? A upon B is same as C upon B. जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, थोड़ा सा अपोजिट करना है. पहले वाले में आपको CS स्क्वायर इज इक्वल टू बोला गया था, वो वाला आप एक्सपेंड कर रहे थे. एंड अगेन एलएचएस वाला एकदम आरएचएस पे लेके आप A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, ये वाले केस में चले गए. अभी इधर क्या मिलेगा? देखो आपको A अपॉन BO इज सेम एज CO अपॉन BO, राइट? So what I can say, what I will do, will just interchange these two terms. Getting this one? What we are doing? We are just shifting the places. We are just interchanging these two. So instead of writing AO upon BO, now I am writing AO upon CO. It's same as BO upon BO. ऐसे हमने क्यों लिखा? You can say here AC is a diagonal, right? So we can say that there is a point O somewhere in between A and C. ये ऐसा ही क्यों किया? Because diagonal के बारे में बोल रहा है that we are considering O is any point on this line. Similarly, BD is our second diagonal, तो BD के लिए आपको एक point मिलेगा. So that we can check produces two triangles, right? So AO upon CO is same as BO upon DO. So AOB and COD के लिए आप क्या बोल सकते हो? In triangle AOB and in triangle COD, AO upon CO is same as BO upon DO. मतलब आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शनल ये बोला गया है, राइट? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन. सो व्हाट वी कैन से, if those are in the same proportion, then what is the next case? I can see there is a x factor, right? X factor is nothing but जो भी आपको अपोजिट वाले एंगल्स मिलेंगे, those will be are of same measure. What might be the reason for it? Opposite angles, correct? So we can say that angle AOB is same as angle COD. The reason is vertically opposite angle. What will be the reason? Reason is nothing but vertically opposite angles, right? So we can say that the triangle AOB and triangle COD are similar triangles, right? Getting this one? समझ में आ रहा है? By which case? By SAS criterion. इस केस में आपको साइड के बारे में बोला गया, that is those are in same proportion. If those are in same proportion, then we can say that AO upon CO. मतलब जो अगर आप proportionality constant consider करोगे, then वो वाले एस क्राइटेरियन का मल्टीप्लिसिटी का मिल जाएगा. देन
using the vertically opposite angle वाला property, we can say that measure of angle AOB is same as angle COB. So by SAS criterion, that is which will be the side we are talking about two sides and a angle between them. So by S criterion, you will get that two triangles are similar. So if two triangles are similar, then angle ABO will be same as CDO again. Which one? Which case? Corresponding angle of similar triangle. अगर आपको करस्पॉन्डिंग साइड के बारे में बोलना है तो आपको यूज करना होगा प्रोपोर्शनलिटी वाला केस ओके इफ यू हैव टू यूज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल तो आप प्रोपोर्शनलिटी के बारे में बोल सकते हो बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अगर आपको एंगल के बारे में बोलना है देन वी कैन से दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल ओके क्लियर विद दिस देखो समझ में आ रहा है एबीओ इज सेम एज सीडीओ सो एबीओ एबीओ आप क्या लिख सकते हो देखो ए बी ओ ABO is nothing but ABD because BOD are collinear point. So instead of writing ABO, I will use ABD here. Similarly, आप केस कंसिडर करोगे CDB का सेम रहेगा जैसे आपको इधर CDO मिल रहा है CDO मतलब CDO. So instead of writing CDO, we'll write CDB. वो सेम रहेंगे गेटिंग दिस वन इतना समझ में आ रहा है बट व्हाट कैन आई से दिस इज नथिंग बट अगर आप इन दो एंगल के बारे में बोलोगे देन दे आर फॉर्मिंग अ जेड लेटर अगर रहता तो जेड लेटर इज नथिंग बट गुड जेड लेटर इज नथिंग बट वी कैन यूज द इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी vice versa दोनों भी केस आपको मिलेंगे इधर राइट सो वी कैन से दैट if ABD and CDB are equal this is nothing but a pair of alternate interior angle alternate interior angle आपको क्यों मिला because you can see the letter Z here it is enough to prove that line AB or side AB is parallel to side BC. AB is parallel to BC. जो आपको प्रूव करना था. Getting this one? This is all about to show that AB is parallel to CD. क्या किया हमने हमेशा आप यूज करते हो अगर साइड्स पैरेलल है और आपको Z लेटर दिख रहा है तो जो भी इंटीरियर एंगल्स रहेंगे आप वो सेम रहते ये बोले. Now we are considering the inverse criteria. If Z वाला जो भी कुछ एंगल है वो अगर आपको सेम मिल रहे हैं इट मींस दैट दोस आर नथिंग बट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल अगर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल रहेंगे then these two sides will be parallel to each other and if we are talking about a quadrilateral in which two opposite sides any one pair of opposite side is parallel then that quadrilateral will be trapezium. So this is all about our question number 10. Okay. Go through it and if you have any doubt then you can ask anytime. समझ में आ रहा है क्या बच्चों? पक्का? डाउट है क्या कोई? जो भी हम आज के लेक्चर में कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है अच्छे से 6.3 लेंथी वाला एक्सरसाइज है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें एंड अगर आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन अच्छे से करते हो तो आपका लॉजिक भी डेवलप हो जाएगा मतलब जैसे इस टाइप की क्वेश्चन रहेगी एबीसीडी ट्रैपिज्म है ट्रैपिज्म मतलब क्या रहता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रैपिज्म
इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेपेजम तो फिर आपको एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ये पैरेलल रहेंगे, ये प्रूव करना काफी था। तो साइड्स पैरेलल है, इसके लिए हमने किसका यूज किया इस केस में? ऑब्वियसली द चैप्टर इज ऑल अबाउट ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल मिलते हैं क्या देखे, टू डिस्टिंक्ट ट्रायंगल। वो ट्रायंगल हमने सिमिलर बनाया, सिमिलर के बाद और जो भी कुछ आप कर रहे थे इसका यूज करके जो आपको सिर्फ ABO एंड CDO मिल रहा था, दैट इज corresponding angle of similar triangle. So instead of writing ABO, we know that AOC are collinear points. Similarly, BOD are collinear points. So for this ABO equal to CDO, हमने यूज क्या किया फिर इधर ABD is equal to CDB. This is nothing but this is nothing but we can see there is a Z letter, तो Z letter रहता है तो फिर इंटीरियर एंगल वाला अल्टरनेट एंगल का आपको पता है, तो उसी का यूज करके आपने क्या बोला here AB will be parallel to CD or DC such that BD will be transversal or समझ में आ रहा है आपको हमने क्या किया पक्का? ओके okay. Okay. So we'll just try to discuss one of the solved example from the textbook. We are just going to discuss one of the solved example so that आपको ये समझ में आ जाएगा। पहले in case अभी क्या है देखो, if a line intersect AB and AC of a triangle in D and E respectively, which is parallel to BC. It means that I can see there is one triangle and in that triangle DE is intersecting the side AB and AC such that the line itself is parallel to one of the side of that triangle, that is BC. Then what we have to prove? This line divides the sides AB and AC in proportion. That is AD upon AB is same as AE upon AC. ये रेशियो के बारे में आपको बोलना है। Getting this one? समझ में आ रहा है? Yes. The line intersect AB and AC at D and E respectively. So this will be our point D, this will be our point A, and this line is parallel to BC. Okay. So we can see there are two triangles. The one is ADE and second one is ABC. ये जो आप लाइन कंसिडर करे हो दैट इज लाइन जो हम अभी DE ऐसे बोल सकते हैं, ये जो लाइन है इसकी वजह से पूरे triangle के two parts हो गए. So I can say that now there are two triangles. The first one is AE and the second one is ABC. So in ADE and ABC, what can I say? Angle D and angle B will be same. What will be reason for it? ये two lines parallel है, ये बोल दिया है. If DE is parallel to BC, then AB will work as a transversal for it. और अगर two parallel line के लिए एक transversal रहती है, तो आप क्या बोल सकते हो? Correct. Corresponding angles will be of same region. तो इसके लिए आपको ये ADE and ABC same मिले. What is reason? Corresponding angle. Then I can see that in triangle ADE and ABC, A vertex same है,
जैसे मैंने बोला था अगर वर्टेक्स सेम रहता तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉमन रहेंगे तो हम वो इक्वल है ऐसे बोल सकते हैं, राइट? सो angle DAE and angle BAC will be same. What will be reason here? That is common angle. Okay. So I think इतना काफी है क्या आपके लिए? Two angles आपको equal मिल गए. So we can say that triangle ADE similar to triangle ABC by similarity criteria. ADE similar to ABC by similarity criteria. But what we have to actually prove that AD upon AB दिखाई दे रहा है कि AD upon AB is same as AE upon AC. Correct. जैसे आपने गेस किया आपको यही काम इधर करना है. If ADE and ABC are similar triangles, then what I will use first to second? First to second. So AD upon AB is same as first to third. First to third अगर first angle को consider करते हैं ना first to third. That is I can say AE upon AC. इससे equal रहेगा. AD upon AB is same as AE upon AC. Obviously, what will be the reason for it? That corresponding sides of similar triangle. जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया है. If we talking about corresponding sides of similar triangle, साइड का जो भी करस्पॉन्डेंस है वो आपको प्रोपोर्शन के बारे में बोलता है. यू हैव टू टॉक अबाउट दिस इन द केस ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. देन वी कैन से दैट एंगल तो इक्वल मिल सकता है. तो अभी आपको क्या मिला जो आपको प्रूव करना था. दिस इज ऑल अबाउट द रिक्वायर्ड, that is corresponding sides of similar triangle are equal. Then clear हो रहा है ये? समझ में आ रहा है पूरा? आज के लेक्चर में हमने जो भी कुछ देखा है आपको क्लियर हो गया? हमने क्या किया था? We are just going through few questions from our exercise 6.3. कुछ इधर आपने कंप्लीट किए, कुछ आपको मैंने बोला है दैट डू इट ऑन योर ओन. आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चंस देंगे. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क एनी टाइम. ओके, क्लियर विथ दिस? समझ में आ रहा है ये? जो भी कुछ आज हमने आज के लेक्चर में देखा है आपको समझ में आ गया है पूरा? ओके देन this is all about our today's lecture. We'll stop here, but for the next lecture ऐसे ही जो important cases रहेंगे, जो थोड़े से twisted वाले cases रहते हैं, वो हम सारे इधर discuss करेंगे. Next lecture में और भी कुछ example करेंगे and our next part जो रहेगा, वैसे तो पूरा triangle chapter ही important है, but one by one आपको कुछ और नए ideas मिलते जाते हैं इसमें, right? So in the next lecture, we'll try to solve more questions and we'll try to solve and we'll try to clear the basic concepts. Okay, thank you.